एक मेमोरी मेरी ये है कि एक एमएलए ने बोला, जो कि बहुत पावरफुल थे, रूलिंग पार्टी के थे, वो कहते हैं कि विवेक जी हम लोग विलेज टूरिंग पे जा रहे हैं, ही वॉज आवर एमएलए, और आप भी साथ चलिए। तो मैं अब 24-25 साल का था, लेकिन मैं स्टैंड ले लेता था। मैंने व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह केम, आई वाज नंबर 6 इन द लाइन। लकीली दे टोल्ड मी कि यू आर डायरेक्टर आईटी, यू शुड बी इन द क्यू टू रिसीव द प्राइम मिनिस्टर। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी, and I've said this on air earlier also. The way he shook my hand, the calmness Dr. Manmohan Singh had, the grace, and the way he was so humble in his demeanor. तो फिर फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट करना, सिक्स टाइम अटेम्प्ट करना मे नॉट बी राइट। फैमिली भी वेट कर रही है, लाइफ भी वेट कर रही है, रिलेशनशिप्स भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं और जॉब ऐसी मिल जाए। एनीबडी हु इज इनटू स्पोर्ट्स विल अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, will be a better person at handling challenges. हमने तो लिख दिया, मुझे क्या पता लोग पढ़ेंगे उसको, और फिर टेस्ट आया हुआ है। What time did the author's sister wake up in every day? मैंने सिस्टर को बताया, फेमस हो गई। सर आपने अभी बताया कि 28 एडिशंस हो चुकी हैं। हाँ, कमाल। So that means कि 28 years से हो रहा है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन helps us to it. We are affiliated with the BCCI. We have 16 teams. Most of India's cricketers, including Ganguly, Dhoni, Sehwag, Gambhir, have played. But I feel that we should do our best to keep a positive attitude and stay afloat and raise the level of our consciousness. And it's so nice to be a part of Novel Punch, where we are both members. Yes. Where people are really, learning from each other, gaining from each other, and the kind of atmosphere founders have. Life is not about marks. Life is about making a mark. So don't worry about numbers, that is marks, money, this, that. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज के शो में हमारे साथ हैं मिस्टर विवेक अत्रे। सर, आपका सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ वेलकम करते हैं। मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। मुबारक हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर। इट इज वेरी डिफिकल्ट जब लाइफ में हम इतना बिजी रहते हैं, तो और स्पेशली विवेक अत्रे सर, जो ऐसी पर्सनैलिटी जो 1, 2, 4, 5 काम में नहीं, पता नहीं हर फील्ड में ही सर आप तो बिजी रहते हैं। सो यू आर ex-IAS ऑफिसर, यस, यू आर ऑल्सो एन ऑथर, यू आर ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर ऑल्सो अ TEDx स्पीकर। ऑल्सो ऐड करके लंबा लग रहा है। ये स्पीकर में ही आ गया, TEDx जो है वो स्पीकर में ही आ गया। सर मोटिवेशनल स्पीकर होना और TEDx स्पीकर होना बहुत डिफरेंट है। ये हमसे पूछो जो चाहता है कि हम भी TEDx स्पीकर बने। बनोगे, जरूर बनोगे। थैंक यू सर। सो यस, सो इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू सर। एंड आज हमारे शो पे आने के लिए सर ने टाइम निकाला, तो लेट्स होप के बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटिंग बातें होंगी यहाँ पे। एब्सोल्युटली सर, शुरुआत ही करते हैं आपके IAS की करियर से, एंड वील ट्राई के बहुत ज्यादा भी सीरियस ना रहे, बट स्टिल एज एन IAS ऑफिसर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, एंड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कहीं ना कहीं स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर बहुत रहता है। तो अभी तो आप उस पोस्ट पे नहीं हैं, बट एज लॉन्ग एज यू वर देयर एज एन IAS ऑफिसर सर्विंग द पीपल अराउंड, sir, how was the experience and how difficult was the experience? I would rather ask. Very difficult to put it in a nutshell, पर experience overall public service का अच्छा ही होता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं, service is the key। तो I found a lot of goodwill। लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया मेरे करियर को, और जहाँ भी मैं गया तो एक पहचान मिली, एक गुडविल मिली, एक गर्म जोशी मिली, एंड पीपल वर वेरी पॉजिटिव रादर मोस्टली। एंड सेकंड पॉइंट इज कि IAS का जो करियर होता है वो बहुत ज्यादा एक उसका एक्सपेंस होता है, बहुत वैरायटी होती है, बहुत कुछ होता है उसमें। और पहले मैं हरियाणा सिविल सर्विस में था, फिर IAS में आया, तो बहुत जर्नी थी, बहुत लोग मिले, कई पोस्टिंग्स आई, कई मुश्किलें भी आई, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी रही। बस ये है कि उसमें हम एक गरिमा में रहते हैं, एक सिस्टम में रहते हैं, एक पर्टिकुलर मोड में रहते हैं। तो अब मैंने एक लाइटर साइड पे बात ये है कि एवर सिंस आई रिजाइन, पीपल टेल मी दैट माय स्माइल हैज वाइडन्ड, सो आई बिकम मोर फ्री इन माय पर्सनालिटी। तो ये मुझे पहले नहीं लगता था ऐसा, लेकिन अब डिस्कवर हो गया। तो सर, इज इट रिलेटेड टू दैट स्ट्रेस ऑफ द चेयर कि उस टाइम पे इतनी वाइड स्माइल नहीं थी? Probably more to do with your consciousness as an officer. I am an officer. I have to conduct myself in a certain way. So, of course, यारों दोस्तों के साथ तो अपना दोस्ती थी, पर अब जनरल पब्लिक में भी I am more
कूल काम, मोर माई सेल्फ, लेट मी से। उस टाइम थोड़ा ऑफिसर लाइक बने होते थे, हालांकि आई वॉज probably a cheerful personality even then, जी but now more cheerful, let's say. yes sir, no doubt about that. So because you have already talked about positivity in that tenure, जिस टाइम पे आप काम कर रहे थे, सर्व कर रहे थे एज एन आईएएस ऑफिसर, सो सर लेट्स हियर फ्रॉम यू कि उस टाइम पे डेवलपमेंट भी बहुत हुई आसपास, चंडीगढ़ में भी, न्यू चंडीगढ़, अदर एरियाज, तो सम पॉजिटिव मेमोरीज या कुछ चीयरफुल मेमोरीज जो उस टाइम की आप याद कर सकें, एंड प्लीज हाँ, शेयर। दो तीन मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं एसडीएम कालका था एज ए यंग ऑफिसर, स्टूडेंट कहने लगा था, बट एज ए यंग ऑफिसर आई वाज 24-25। एक मेमोरी मेरी ये है कि एक एमएलए ने बोला, जो कि बहुत पावरफुल थे, रूलिंग पार्टी के थे, वो कहते हैं कि विवेक जी हम लोग विलेज टूरिंग पे जा रहे हैं, ही वाज आवर एमएलए, और आप भी साथ चलिए। तो मैं अब 24-25 साल का था, लेकिन मैं स्टैंड ले लेता था। मैंने उनको कहा कि देखो ऐसा है, आप हैं एमएलए, एमएलए के साथ एसडीएम नहीं जा सकते। तो अगर कोई मंत्री आएंगे तो हम जाएंगे। वो कहते चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फलाने मंत्री को भी ले चलते हैं साथ को, ही वाज द सीएम सन जी। तो ठीक है, वो भी चल पड़े। तो फिर हाँ, मंत्री ऑफिशियल टूर पे आ रहे हैं, हम भी चल पड़े। तो वेरी एंटरटेनिंग बट वेरी प्रैक्टिकल वे टू हैंडल अ सिचुएशन। उसके बाद वन और टू मेमोरीज फ्रॉम द आईटी पार्क व्हिच वाज बीइंग सेट अप इन चंडीगढ़। बहुत हमने जद्दोजहद की, मुश्किल हुई, और बहुत वी हैड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। द प्राइम मिनिस्टर केम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। Okay. Now, when Dr. Manmohan Singh came, I was number 6 in the line. Luckily, they told me that you are Director IT, you should be in the queue to receive the Prime Minister. I was introduced by the Chief Secretary, and I've said this on air earlier also. The way he shook my hand, the calmness Dr. Manmohan Singh had, the grace, and the way he was so humble in his demeanor. मुझे लगा कि प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें थोड़ा डर के रहना चाहिए, बट वो बड़े वार्म थे, और वार्मली वो मिले मुझे भी, और उन्होंने अच्छी बातें की ऑफिसर ने मेरे बारे में, बिकॉज आईटी पार्क में रोल तो था ही। The IT Park and East Sampark of Chandigarh, they were two projects where I had some contribution, and I feel I was able to do something which was before my eyes, it came up. So I was very happy, and और भी चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ। सर बट ऑल दोज एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज जैसे आप उस टाइम पे फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ पीएम सर, उसी तरह हम जब आप जैसे अचीवर्स को मिलते हैं तो देयर इज दैट रिलक्टेंस या एक डर वो ऑफ रिस्पेक्ट रहता है, बट आप भी कभी वो चीज हमें फील नहीं होने देखो, देते। पहली बार ही रहता है ना थोड़ा सा जी। उसके बाद अगर ऑफिसर या जो भी है वो वार्म है और जेंटल है, हमारे बहुत हैं, हम नेम कर देते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही एएस राय सर हैं, आईपीएस ऑफिसर ऑफ पंजाब, such a gentleman and so sweet. One of the example. There are many others also. Yes, sir. But yes, there are others. On this point, there was a video by ZTV at that time. They made one day with the DC Panchkula. I was the DC Panchkula. Okay. एक छोटा लड़का आया 14 years का उनके साथ. He had to decide whether he will aspire for the civil services after spending one day with the DC. To see कि अच्छा है, जॉब नहीं है, क्या है, उसको 14 साल के बच्चे को पता नहीं होता क्या है. हाँ जी. So he spent the whole day with me and the TV camera crew, and they went off wherever I went. So they asked him at the end of the day in my presence कि बताओ फिर अब आपको कैसा लगा और आप बनना चाहते हो फिर डीसी? कहते मैं पहला ये पूछना चाहता हूँ, वो कहता है कि सर आप थके नहीं अभी तक सुबह से? काम तो बहुत होता है. मैंने कहा यार थकने का तो कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है ना, काम तो बहुत करना है. कहते हैं दूसरी बात सर, मैंने सुना था कि डीसी बड़े खड़ूस होते हैं, तो आप तो, मैंने कहा नहीं देखो भी बात है, अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, अभी भी खड़ूस डीसी भी हैं और नॉन खड़ूस भी हैं, तो तभी तो सिस्टम चल रहा है. एग्जैक्टली. सो दिस इज द पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन जो हमेशा ही विवेक सर से मिलती है, एंड दिस इज नॉट बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन कैमरा, तो अगर बिना कैमरा के भी जनरली भी हम बातें कर रहे होते हैं, विवेक सर इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटिंग. ऑलवेज टॉक लाइक दिस. जी सर. सर अब बिकॉज यू आर आल्सो एन आईएएस ऑफिसर, और अब आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भी सपोर्ट करते हैं, आप उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाट डू यू फील कि आज उस टाइम पे जब आप सर्व कर रहे थे, आज अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस मैनेज कैसे करना सिखाते हो सर? एंड आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड जो तकरीबन 8 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, इंटरव्यू तक 2 बार पहुंच गया है, बट वो इंटरव्यू नहीं 2 बार क्लियर हो पाई लास्ट टाइम भी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा. मुझे लगता है 8 साल बहुत ज्यादा है.
मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को 3 या 4 साल तक तैयारी करनी चाहिए। अगर उनका ब्रेक थ्रू हो जाता है तो फिर वो उनके लिए है वो फील्ड। अगर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और आप क्लोज भी नहीं आए, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, या आप बहुत दूर रह गए, तो फिर 5th टाइम अटेम्प्ट करना, 6th टाइम अटेम्प्ट करना मे नॉट बी राइट। फैमिली भी वेट कर रही है, लाइफ भी वेट कर रही है, रिलेशनशिप्स भी वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं और जॉब ऐसी मिल जाए जहां आप यूएनओ में ट्राई कर लो, वर्ल्ड बैंक में ट्राई कर लो, अगर आपने पब्लिक सेक्टर में जाना है। आप, मैं ये नहीं कहता कि वो भी आसान है, वो भी मुश्किल है। yes. आप किसी एनजीओ में ट्राई कर लो। पब्लिक सर्विस इन एन एनजीओ टुडे इज वेरी गुड। माय डॉटर इज इन एन एनजीओ and she started working with something called Swasti, healthcare education sector, and she's very happy. It is public service, but it's not in the IAS or PCS, and it's easier to get it. And they are well paid also. It's a good salary. So I think it's something that now you have to widen your horizon. और 8 साल मत लगाओ। So my message through your podcast, I must say, is that you must spend 3 years finding out whether you're good enough to go forward. If you are not anywhere close, मैं अब इंडियन टीम में आना चाहता था एज अ क्रिकेटर, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एज एन 18-year-old आई रियलाइज, माय फादर आस्क्ड मी कि या तो तुम अभी टॉप लेवल खेल रहे हो या फिर इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई करो, क्रिकेट छोड़ो। सो ही वाज राइट, बिकॉज आइदर आई हैव रीच्ड अ लेवल वेयर आई एम क्लियरिंग यूपीएससी और ऑलमोस्ट क्लियरिंग यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस, और आई शुड स्टॉप दैट रूट एंड गो टू समथिंग व्हिच माइट बी इजियर फॉर मी। सो क्रिकेट छोड़ के आई वेंट टू इंजीनियरिंग एंड देन सिविल सर्विसेज, although cricket is still my life. But there the UPSC aspirant has to realize that this is not for me. I go somewhere else. It is good for him or her. Okay, that's a very, very important message to all the UPSC aspirants out there. सर, अब आपने क्रिकेट की बात कर दी है तो वो तो एनीवेज मैं आपसे पूछना ही था मैंने, बट क्योंकि अब आ ही गई है क्रिकेट डिस्कशंस में, तो हाउ हैज बीन योर लाइफ इन द फील्ड? आउट ऑफ द फील्ड तो सबने देखा है एज एन आईएएस ऑफिसर, अभी एज अ राइटर, एज अ स्पीकर, बट वो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जैसे आपने पहले कहा कि डिफरेंट वाइब होती है, डिफरेंट स्माइल होती है, डिफरेंट मूड होता है. टेल अस समथिंग अबाउट क्रिकेट एंड मे बी वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द डेज ऑफ योर फादर, बिकॉज अभी भी उनके नाम पे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है. Exactly. So that's a good point. So firstly, sports के बारे में one or two sentences that anybody who is into sports will understand life better, will be a better person at handling challenges. लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, क्रिकेट में और बैडमिंटन में, टेनिस में, सॉकर में अप डाउन चलेगा, कभी जीत कभी हार, एथलेटिक्स में. So a sports person understands that we can lose, we can win, and every day is not the same. You give your best and the result is not in your hand, which is also the philosophy of life. जी सर. Then cricket में क्या होता है that cricket is a great leveler. आपने 135 रन बना दिए, अगले बारी आप 0 पे आउट हो गए. It's not like you will come to 135 के बाद you will make 120. No guarantee. You start from 0. So every day you start from 0 in life also. So cricket से हम सीखते हैं कि every day is a new day. There is a scope to shine and there is a scope to make mistakes also. So you may go up and down, anything can happen. So for me, cricket has been my first love, and Nina is my wife. We met in college. I was only 19 years old. She was about 17, 18. So then only I told her cricket is my first love. तो हमारा मजाक कभी भी चलता रहता है कि तुम्हारा तो first love is cricket. The first love is cricket, and still with me. But cricket is something which I think has given me more joy, and I feel that someone like Sachin Tendulkar I've admired, and someone like Kapil Dev I've admired, Gavaskar I've admired, Virat Kohli I admire. But now the thing is that we have to all understand some inspiration also has to come to us. अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो म्यूजिक में भी है, अगर वो टेनिस में भी है, अगर वो आर्ट में है, तो उसका एक वो हार्ट इज मोर इनटू दैट लाइफ. सो क्रिकेट इज माइन. That's a beautiful way to put it. सर, आपसे अभी मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता था, एंड दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग. अब ऑन द फील्ड इट इज अ टोटली डिफरेंट वाइब, एज एन ऑफिसर इट्स अ टोटली डिफरेंट वाइब, बट जब हम लिखते हैं तो वी नीड पीस, वी आर इन अ टोटली डिफरेंट मूड. When did you start writing, and how does it how did it come to writing as a motivational speaker or motivational writer? Because आपने recently एक जो book release करी थी, that was about motivating the people. Yes, it's still a wonderful life. It's a motivational book. So you're very right. First I became a writer. I was quite shy in school. I was quite shy. It's hard to believe today because I'm confident.
But in school, I was shy and I was a writer, but I mean, I used to write stories. And then I used to write essays. Of course, everybody has to write essays. वो तो स्कूल की मैडम ही बोलती है लिखो. लेकिन मेरा कुछ पढ़ने, बुक्स पढ़ने में और लिखने में एक शौक था. So मुझे ऐसा लगा कि I should write more, and I wrote in the college magazine. Every year we had one issue, and all 4 years my article was published in the NIT Kurukshetra, which is a huge college, and it was a prestigious thing. उसके बाद फिर when we got married, my wife told me to write. That you should continue writing. I was SDM, and SDM is a busy person. उसके बाद कुछ और, life तो निकल जाएगी. She said you must write. Now, first my middle was published in the Tribune, and I wrote something on hands and knees. And even before that, I think I wrote Blast from the Past. So something I wrote which were memories of my early service career of the first 5 years. So after 5-6 years of service, I started writing. At the age of about 30 maybe, I started writing seriously. And at that stage, I became a regular contributor to articles in the Tribune, in the Hindustan Times, in the Indian Express, in the Times of India also. And I was director of public relations, so I knew all the media. So they also used to tell me, "Sir, आप हमारे लिए भी लिखो, हमारे लिए लिखो." तो वो भी एक फायदा हो गया. Yeah. But then when I became more of a writer, then I became in the Times of India National Edition. One of my articles was published in the Maharashtra Class 12 textbook. Okay. And I was shocked. One classmate of mine was the principal there, Anmol madam. She'd send me, "Vivek, तुम्हारा तो हमारी टेक्स्ट बुक में लोग रट्टे मार रहे हैं तुम्हारे आर्टिकल के." I wrote something called the yawning divide. कि कुछ लोग 11 बजे उठते हैं सुबह, कुछ लोग 4:30 बजे उठते हैं एक ही कंट्री में. तो ऐसा लगता है वो किसी दूसरी कंट्री के टाइम जोन में है. So yawning divide was a humorous piece. But those Maharashtra, then I saw some videos of Maharashtra schoolboys and teachers struggling to understand the meaning of something. And he's repeating. He says, early bird means this, this, this. The teacher is saying. मैंने early bird लिखा हुआ था उसमें. हमने तो लिख दिया. मुझे क्या पता लोग पढ़ेंगे उसको. और फिर टेस्ट आया हुआ है. What time did the author's sister wake up in every day? Okay. मैंने sister को बताया, famous हो गई. Okay. So I got these motivations. Then I wrote my first book called Move On Money. Then Dubeji Bounces Back. Then I wrote a motivational book, Finding Success Within. Then I wrote this book, It's Still a Wonderful Life, which came from my column, which is Random Forays, which is now 7 years old, and 7.5, and it's crossed 200 pieces. And the first book contains 125 of them. So when another 125 are ready, I'll have the next book. So yeah, so I became a motivational writer. And then I became a motivational speaker. Okay. So just to tell you all कि मैं भी जब as a writer introduce हुआ हूँ तो मेरी पहली book भी विवेक अत्रे सर ने ही रिलीज करी थी. And he is the one who motivated me and guided me कि कैसे literary societies मुझे join करनी चाहिए और कैसे कैसे उनसे कितना benefit मिल सकता है. So we are not just talking about things on camera. Otherwise, in real life, there are very less people around जो इतना positively सबको motivate करें, guide करें और अच्छी चीजों के लिए सजेस्ट करें. Mubarak, you, just to interrupt, you have started your own journey, and as a writer now as a podcast, and you should I think keep at it and you'll do very well. Yes, thank you so much sir. When we were talking about cricket, मैं एक चीज पूछनी आपसे भूल गया. हमने सर का जिक्र तो किया, लेकिन आप उनके नाम पे जेपी अत्रे क्रिकेट टूर्नामेंट अभी भी करवा रहे हैं. How does it feel to organize a tournament which is directly dedicated to your father, which is on his name? How it feels great. Actually, he left the world early at the age of 50. And one of his close friends who's into cricket, Mr. Sushil Kapoor, who's a mentor to Kapil Dev also in earlier times. Now he's very senior in age. He said, "Vivek, let's do a tournament in your father's memory." I was 24 again. I just joined the service at CS, SDM. I was busy, but I said, "Chalo, uncle, karte hain." We did it. The first 3-4 years we struggled. But we had teams like SAIL, Steel Authority of India, Kapil Dev also came because of the connections. Other things also happened. All these things put together made it an absolutely fantastic tournament today. And today we have done 28 editions. Every year my father's name is there in the papers, picture is there. So some people, they construct a room or they donate something in their parents' memory, which is great. I chose this path of doing a tournament. I think it's something which makes his friends come together every year in the final family, and then cricketers, and then
that my first love also. तो सर आपने अभी बताया कि 28 एडिशंस हो चुकी हैं हाँ, इसमें, कमाल so हो that means कि 28 ईयर्स से हो रहा है, हर साल एक, बिल्कुल हो रहा है. थोड़ा अभी 30 इयर्स से हो रहा है, वो एक दो बारी हम नहीं कर पाए बीच में कोविड भी आया है, कोविड भी आता है. एग्जैक्टली. Amazing, it's amazing. And Punjab Cricket Association helps us to it. Okay. We are affiliated with the BCCI. We have 16 teams, and except for 5 Indian cricketers, Tendulkar, Kumble, Srinath, Dravid, and Lakshman, most of India's cricketers, including Ganguly, Dhoni, Sehwag, Gambhir, have played. Amazing, sir. वो अपने आप में ये एक अचीवमेंट है, and that is not for any personal benefit because it is on the name of father. जो टूर्नामेंट चल रहा है तो उसकी एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है सर, अलग ही खुशी है. बिल्कुल नहीं, that's really true. Yes, sir. So, all the things that we have discussed till now, ठीक है, हम स्ट्रगल का नाम नहीं दे रहे हैं, but it shows how much you have worked and how hard you have worked throughout your life. But sir, how difficult or how easy it is to remain positive and motivated throughout all this? I think this is a very important question you're asking me, Mubarak. सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई डाउन साइड होती है. मुश्किलें आपको भी आती हैं, मुझे भी आती हैं, नेक्स्ट व्यूअर को भी आती हैं. तो देखिए, लाइफ इज नॉट मेंट टू बी परफेक्ट. We are not perfect, so we cannot expect perfection. We should take the rough with the smooth, and it's very easy for me to say it. There are days when I also feel low, and there are phases in life which have been difficult. But I feel that we should do our best to keep a positive attitude and stay afloat and raise the level of our consciousness. That comes to spirituality. When you are connected to your religion, when you're connected to your spiritual thought, which is even higher than religion, I would say, then we are truly successful in reaching within. And I think that's a beautiful phase. That's a beautiful phase. Yeah. And what message would you like to give to all the viewers, sir, कि अगर किसी न किसी तरह के लो फेज में से निकल रहे हैं, जैसे आपने कहा हम सभी निकलते हैं उसमें से, बिल्कुल निकलते हैं, बट सबके लिए पॉजिटिव या मोटिवेटेड रहना कहीं ना कहीं नहीं पॉसिबल रहता, तो वो पॉजिटिविटी हम कहाँ से एक्सपेक्ट? अल्टीमेटली वो अंदर से ही आएगी, हमारे एटीट्यूड से. तो व्हेन यू आर ऑफलाइन, व्हिच मींस उस वक्त आप स्ट्रगल में नहीं है, जब आपका ठीक टाइम चल रहा है, थोड़ा बहुत रिलेटिवली और फाइन, दैट इज द टाइम यू हैव टू be determined that I am going to face the next challenge with balance and calmness. I am not going to lose my cool. I am not going to feel scared. When you are in the middle of it, it's difficult to make that resolution. So पहले से तैयारी करके आओ. जब आप बैटिंग करने जाते हैं पहले तैयार होके आते हैं ना, वो फास्ट बॉलर आ रहा है, तो हम जब लाइफ की सिचुएशंस में थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, उस वक्त हमें काम करना है, तब हम भूल जाते हैं ना नॉर्मली. So, second point is that we should try and raise the level of our consciousness by meditation, by spiritual aspects, by reading, by following inspiring personalities. And अभी सैम बहादुर पिक्चर आई है, हाँ जी, हम सबने देखी है, क्या जबरदस्त बंदा है. अब सैम बहादुर से ही हम अगर इंस्पिरेशन ले लें, किसी ने वहां पे तो कोई लिमिट नहीं है ना. He can inspire billions of people even today. So people need to draw inspiration from somewhere, and then you will be able to handle the problems of life. Uninspired living का कोई फायदा नहीं है. रूटीन में चल रहा है जी, स्टॉक मार्केट जा रहे हैं, वो पैसा आ गया चला गया, फलाना हो गया, गाड़ी खरीद ली, वो बंदे मिल गए, वो तो कोई लाइफ नहीं है. Right. And sir, before we close the show, I would like to talk about literature and the activities जिनके साथ आप इतना positively connected रहते हो, कि कहीं ना कहीं literature भी आपको वो किक देता है पॉजिटिव रहने की. बिल्कुल. इनफैक्ट आई फील कि लिटरेचर अगर हमारी लाइफ का पार्ट है, आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अगर मैंने लिटरेचर पढ़ी होती तो शायद मैं और अच्छा लिखता बोलता. हालांकि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मुझे बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर्स भेजते हैं, उनके आपको बहुत बढ़िया लिखा है, तो मुझे लगता है वो लिटरेचर का मैं जो कर ही लिया मैंने, समझ लो. तो बट आई थिंक आई लव बुक्स. I love the company of people who talk about books and who talk about authors and writing, and I think they are deep thinkers. Authors are right, अपने आपस में तारीफ ही कर रहे हैं एक दूसरे की. नहीं, but still, sir, you are very positively connected with all the literary people in the city, outside the city. There are so many literary societies now, and I feel that I have been deeply connected with the literary movement in Chandigarh. Very happy to be. And it's so nice to be a part of Novel Bunch, where we are both members, yes, where people are really, learning from each other, gaining from each other, and the kind of atmosphere
founders Hardeep and Saguna, Yes, and Hardeep ji has already been on your show. yes, sir. So I hope one by one all the Novel Bunch members will be on your show. It would be my pleasure, sir. So that's how Mr. Vivek Atray sir is. हमेशा positive, हमेशा कोशिश भी करते हैं कि दूसरा बंदा भी positive रहे, because जैसे मैंने पहले बताया कि there is always that sense of responsibility and reluctance कि हम इतने बड़े achiever के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो फिक्र सा डर सा रहता है ना कि we should be flawless. But sir always make sure कि we are comfortable and हमें वो फिक्र हमारे दिमाग में ना रहे. So sir, before we close the show, any message of positivity and motivation? अब आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, जी TEDx में जी गए, बिल्कुल तो बिल्कुल अब वो फायदा तो मैं लूंगा वो तो बनता क्लोज है करने से पहले. बनता है बिल्कुल बनता है. तो एक कोट छोटा सा मेरा है और एक कोट परमहंस योगानंद, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, व्हिच इज अ मल्टी डायमेंशनल मल्टी रिलीजियस बुक. सो माय छोटा सा कोट इज दैट फॉर द यंग पीपल, life is not about marks, life is about making a mark. So don't worry about numbers, that is marks, money, this, that. Make an impactful mark or make an impact in your life by working on your inner castle, inner self, and then you will really shine outside as well. And Paramahansa Yogananda says a spiritual thing, obviously. He says everything can wait, but your search for God cannot wait. So you do your job, you do your career, you make your comfort, but always be connected with the divine. That's what is important. Thank you so much for these wonderful words, sir. I believe ये शो आपको पसंद आया होगा, and as usual I'll expect कि आप सब लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें. My email ID is also mentioned, and a very important message to all of you: connect with Vivek Atray sir, because जितनी पॉजिटिविटी, जितनी मोटिवेशन सर के साथ बात करके या सर की पोस्ट फॉलो करके मिलती है, we always feel positive. And there are a lot of live sessions also जो सर करते हैं, and sir, it is always very, very amazing, wonderful to listen to your words. Let me give you a compliment. You are also a very positive, cheerful personality. Thank you so much, Mubarak. Thank you so much, sir. Thank you so much. The Mubarak Show में अपना टाइम निकाल के आने के लिए. My privilege. Thank you so much.